Today we are going to see what is constraint in a database. Constraints are rules enforced on the data columns of the table. Why we need to set the rules on the data columns or the columns of the database tables? To prevent invalid data from being entered into that database table, right? So why to prevent? Ensuring the accuracy and reliability of the stored data. हमें अगर कुछ accurate data चाहिए, right? So we need to set the constraint, we need to set the rules onto that database table, right? So no one can insert the invalid data or wrong data into that, right? If someone allows onto the form, अगर आप आधार नंबर फिल कर रहे हो, अगर गलती से आप वहाँ पे कैरेक्टर इंसर्ट करते हो, so it will throw an error, right? There is a rule set behind that table, right? So that's why it is not accepting. So similarly in database as well, you can set the rule to insert the data into that particular column to avoid or to prevent the invalid data to be inserted, right? There are several types of constraints are available, so we can use them to set the rule onto the column. जैसे कि the very first is not null constraint. So not null constraint, why we need to use this? The not null constraint ensures that a column cannot have a null value. First of all, what is null value? Null value क्या है? Null value, it represents unknown data. It is not even having anything. It is just null. ठीक है? I have given a note. Null is not the same having no data. It represents unknown data, right? It is not even having a blank space. Null means null, right? So to avoid inserting null value into a table, into a column, we can set this constraint onto a column to avoid inserting the null values, right? अगर मेरे पास कोई एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है, उसमें मैं किसी को भी नल वैल्यू इंसर्ट करने देना नहीं चाहता हूँ, तो आई कैन सेट नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन टू दैट कॉलम, राइट? सो कोई भी वहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा, राइट? सो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज़. अगर उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया गया तो कॉलम ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा नल वैल्यूज़. अगर हमने उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? सो हम लोग देखते हैं अभी एक एग्जांपल के साथ, ठीक है? लेट्स गो टू Postgres. I have a query here, create table employees. First column is employee ID with a data type int, and यहाँ पे मैंने constraint दिया है not null, not space null. Then first name and then last name. Here I didn't used any constraint, right? मैंने पहले कॉलम पे constraint यूज़ किया है, आप कौन से भी कॉलम पे यूज़ कर सकते हो, right? To test how it works. Okay, let me run this query. It is throwing an error. The table is already there, so let me drop the table, drop employees. Let me run this. Sorry, I missed table. So it has got dropped, right? So now create table employees, employee ID int not null, first name varchar, last name varchar, right? So we have query this, we can execute it now. So query has been executed. Now we have a table here, right? Select star from employees. देखते हैं इसमें कुछ डेटा है, अभी हमने क्रिएट किया है. In that sense it won't have any data. Let's start inserting the data. Insert into employees. Don't focus on syntax, just focus on the constraint not null कैसे काम करता है, ठीक है? Insert into employees, values insert करना है मुझे. What are those values? I have 3 columns. First is ID 101 I'm passing, name I'm passing Ajay,
and last name, let's say Patil. ठीक है, let me insert this record, run the query. It has inserted the record. Let's check the data. It has inserted one record, 101 Ajay Patil. We have set the constraint on the very first column, that is employee ID. अब चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग नल पास कर सकते हैं या नहीं. राइट, नल मैंने पास किया है. आई एम पासिंग some different name, ठीक है. फर्स्ट कॉलम में मैंने नल पास किया है. नेम, फर्स्ट नेम इज अ विजय एंड सर नेम इज शाह. ठीक है, लेट मी रन दिस क्वेरी. सो व्हाट एरर इट इज थ्रोइंग, जस्ट रीड. फेलिंग नाउ contains this query, it is giving me this query and violates not null constraint, violating not null constraint. हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट दिया है एंड वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू दैट कॉलम, सो दैट्स व्हाई द कंस्ट्रेंट इज गेटिंग वायलेटेड, द नॉट नल कंस्ट्रेंट इज गेटिंग violated, so that's why it is not allowing us to insert it, right? So let me try to insert 102. instead of Shah, let me put null here. मैं उस कॉलम में null पुट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है. ठीक है, let me run this. Let's see, query returned successfully and we are able to insert this record. फर्स्ट कॉलम में मैंने 102 रखा है, सेकंड में विजय, थर्ड में null. यहाँ पे मैंने थर्ड कॉलम में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अलाउिंग मी टू इंसर्ट. लेट्स चेक द डेटा. व्हेन यू अप्लाई अ कंस्ट्रेंट ऑन एनी ऑफ द कॉलम लाइक नॉट नल कंस्ट्रेंट, you cannot add null value into it. So not null constraint ensures that you are not going to insert any null value into that column, right? Null in the sense a null value, right? The next constraint is unique key constraint, or unique constraint also you can call it as unique. The unique constraint ensures that all values in a column are different. जिस भी कॉलम पे हमने यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है उस कॉलम में सारे वैल्यूज यूनिक रहेंगे, राइट? इन्फोर्सेस यूनिकनेस ऑन टू दैट कॉलम. कंस्ट्रेंट क्या इन्फोर्स कर रहा है उस कॉलम पे, सारे वैल्यूज यूनिक होने चाहिए. इट इंश्योर्स दैट नो टू रोज इन अ टेबल हैव आइडेंटिकल वैल्यूज. एक ही वैल्यू दूसरे रो में उसी कॉलम में नहीं रहेगी. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ इंश्योरिंग. कॉलम में सारे वैल्यूज़ यूनिक रहेंगे, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आपको ऐड करने नहीं देगा. दैट इज़ व्हाट यूनिक कंस्ट्रेंट सेज, राइट? सो 2 pointers we have, 2 main things here with unique key constraint. Multiple unique constraints. What does it mean? A table can have multiple unique key constraints. एक टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक की कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं. एक टेबल में एक से ज़्यादा नॉट नल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइमरी की आपके टेबल पे सिर्फ एक ही रहेगा. एज ऑफ नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूनिक की कंस्ट्रेंट, बट आई एम गिविंग द डिफरेंस ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड यूनिक की कंस्ट्रेंट. यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या है? तो यूनिक सारे वैल्यूज उस कॉलम में जो भी इंसर्ट होगा वो अलग अलग रहेंगे, यूनिक रहेंगे, डुप्लीकेट नहीं रहेंगे. जैसे कि प्राइमरी की भी वैसे ही काम करता है, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है एंड एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउज नल वैल्यूज. ठीक है, unique key constraint allows you to insert null values because null values are not same, right? एक null value दूसरे null value के साथ कभी मैच नहीं करेगा. A unique column can have multiple null values because
null is not considered equal to any value including itself. null खुद से भी equal नहीं होगा कभी भी. null equals to null false ही आएगा. ठीक है. so that's why it allows you to insert multiple null values. लेकिन अगर जब कभी भी values insert कर रहे हो, at that time you cannot insert duplicate values, right? However, only one null value allowed per column in most cases. ठीक है. वो हम टेस्ट करके देखेंगे. ठीक है. so now we'll test unique key constraint. I'm creating a constraint on users table. Creating a users table. First column is user ID, second is email, third one is username. मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है यूनिक की कंस्ट्रेंट ऑन यूज़र नेम कॉलम. ठीक है. लेट मी रन दिस क्वेरी. रिटर्न सक्सेसफुली. मैं इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड्स अभी इसमें. इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल. मुझे इंसर्ट करना है वैल्यूज़. व्हाट वैल्यूज़? वी हैव 3 डिफरेंट कॉलम्स हियर, राइट? यूज़र आईडी लेट्स से 101. कुछ भी दे सकते हो यूज़र आईडी, बट आई एम गिविंग 101. ईमेल एड्रेस adil@x.com. ठीक है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ईमेल आईडी का. द नेक्स्ट कॉलम इज यूज़र नेम. यूज़र नेम में मैंने आदिल 007 ऐसे दिया है. ठीक है. लेट मी रन दिस क्वेरी. ओके. now we can check the data. select star from users. check the data. 101 adil @x.com. adil 001, right? let me insert one more record. आदिल, ये अलग वाला आदिल है, आदिल शेख. ठीक है. एंड इसने भी सेम यूज़र आईडी इंसर्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. now it will throw an error. duplicate key value, violate unique key constraint, username key, right? so this column username column having unique key constraint, so that's why it is throwing an error. you cannot insert duplicate value which already present into that particular column, right? so now this is not allowed to insert the duplicate values when you have unique key constraint. let's try to insert the null value. ठीक है. डुप्लीकेट तो पॉसिबल नहीं है. लेट मी ट्राई नल वैल्यू. इट इज़ अलाउड, राइट? चेक करते हैं डेटा. सो वी हैव डुप्लीकेट वैल्यू, नल वैल्यू 103 राजू. फिर से एक नल वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ. लेट्स रन. इट इज़ ऑल्सो अलाउड. लेट्स चेक द डेटा. वी हैव multiple null values. let's check one more time. Haji and last column value null. let me run this again. it is allowed to insert. let me check the data. we can add multiple null values, but we cannot have duplicate values into unique key constraint, right? and we can apply multiple unique keys onto a table. let's say I can create unique key with this column as well, right? the next constraint is primary key constraint. so primary key constraint also ensures that you cannot have duplicate values into that column. अगर आपने primary key constraint लगाया है किसी column पे, then
you cannot have duplicate values into it. Addition to unique key constraint, primary key won't allow you to insert the null value as well, right? The primary key constraint uniquely identify each and every record into the column. There can be more unique key constraints onto a table, but you can have only one primary key. Only one single primary key you can have per table. Okay, let's validate this. Let me create a table, orders. I have column order ID, order number. Data type is integer. पहले कॉलम पे मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया है. Let me run this query. Query returned successfully. Let's check. Insert into orders values order ID 5001. दूसरे कॉलम में मैंने इंसर्ट करना है ऑर्डर नंबर, लेट्स से 7654. Let me insert this record. I have inserted it. Select star from orders. I am checking whether the record is inserted or not. Yes, it has got inserted. Now we are going to validate how primary key works. What primary key says is you cannot add duplicate values. ठीक है, पहले कॉलम में मैंने 5001 ऑलरेडी इंसर्ट किया है. लेट मी ट्राई टू इंसर्ट सेम वैल्यू इनटू अ फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने का ट्राई करूँगा मैं. इट विल थ्रो एन एरर. 5001 is already there. You cannot insert the same value. Let me try with different value. Will it allow or not? Yes, let's check. So it has inserted. Let's check the data. So it is ensuring that you cannot insert the duplicate value into a column on which the primary key constraint has been set. Primary key constraint आपको duplicate value insert करने नहीं देगा, right? Let's check. Unique key constraint null allow कर रहा था, right? So we will check null value इसमें allow करता है या नहीं. Null, ठीक है. Let's run. It is not allowing me because it is violating the constraint, right? Primary key constraint won't allow you to insert the null value as well. So this is the primary key. This is about a primary key. Let's check one more thing. मैं table name change करता हूँ, orders 1. Primary key, let me create 2 primary keys. पहले कॉलम पे भी मैं लगा रहा हूँ एंड दूसरे कॉलम पे भी मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ. लेट्स रन दिस क्वेरी. मल्टीपल प्राइमरी कीज ऑफ फॉर टेबल ऑर्डर 1 आर नॉट अलाउड. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगा. दैट इज व्हाट द रूल ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, राइट? सो द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट, right? So the next constraint is foreign key constraint. The foreign key constraint is used to maintain the referential integrity between two related tables. दो tables हैं, उसमें relation maintain करने के लिए हम लोग foreign key यूज़ करेंगे, right? एक table में जो भी primary key है वो same primary key दूसरे table में as a foreign key काम करेगा to define a relationship between these two tables. Let's take an example of foreign key. I am going to create two tables. One is department table, one is employee table. Into department table we have two columns, department ID and department name. On first column we have primary key, okay. Second table we have employee table, EMP table, and the columns are employee ID, EMP name, department ID, and here we have defined the foreign key relationship between employee and department table. Department table का department ID यहाँ पे employee table में
रेफरेंस क्रिएट कर रहा है एज अ फॉरेन की, राइट. The same value present inside department table, DEPT table, will be referencing into employee table. How? Let's check. Let me create this table. Department table with 2 columns. Department ID primary key रहेगा, DEPT ID. ठीक है. Let me run this. Table is got created. Let's create EMP table. EMP table में 3 कॉलम क्रिएट होंगे. वन इज एम्प्लॉय आईडी, दूसरा एम्प्लॉय नेम, DPT ID. ठीक है. एंड दिस विल बी अ फॉरेन की मेंटेनिंग इनटू एम्प्लॉय टेबल, रेफरेंसिंग विथ डिपार्टमेंट टेबल. With this name, the table is already exists. Drop table. Table name is EMP. Let me drop this. Now let's try. Table got created. Let's check the data. Select star from DEPT. हमें DEPT table check करना है. Run this. We have 2 columns. हमें अभी insert करना है data, right? Insert into DEPT values DEPT ID integer है. ठीक है. So DEPT ID I want 10 and DEPT name, let's say HR. DEPT ID 10, DEPT name HR. Let me run this. Okay. One more department I'll create 20 and which is IT. Okay. Let me run this. तीसरा भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, फाइनेंस. ठीक है. 3 records we have into this department table. Department ID 10, 20, 30, HR, IT and finance. Let's insert the data into EMP table values. Employee ID 1, name Ajay. ठीक है. And what's the next column? DPT ID. DPT ID is, let's say he is working into IT department. Then 20. So the next record I'm inserting into employee table. Employee ID 1, employee name is Ajay, department ID is 20. Right. Let me insert this. Successfully inserted. Let's check. Select star from EMP. Employee ID 1 Ajay and 20. Department ID 20. This department ID 20 is referencing to this IT department. So that is what the relationship is. Okay. Let me try to insert to Vijay, department ID is, let's say 40. Let me try to insert. It is throwing an error. I am trying to insert the reference which is not present into the department table. Is not present into a department, right? ये department available ही नहीं है, so still why I am using. So that is what it is throwing an error. I have only 3 departments, 10, 20, 30, right? So I'll be using 10. Returned successfully. Let's check. Okay, fair enough. So by using this reference, how it helps us to store the data in 2 different tables. So now the department related information we are storing into department table. Employee related information we are storing into employee table, right?
So these two tables we can join and we can get the department related information along with employee table. So that's why these tables are separately created and creating a referential integrity between these two tables. The next is check constraint. The check constraint ensures that all values in column satisfy a specific condition. जो भी कंडीशन आप किसी कॉलम पे लगाते हो एज ए कंस्ट्रेंट, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, राइट. इफ़ द कंडीशन इवेलुएट्स फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, देन the constraint violates and you cannot insert that value. The query will throw an error. Let's take an example. Let me create a table emp1. We already have emp, so let me create this table. Table is got created. Select star from emp1. We have constraint here onto a age column. Integer data type है उसका and उस पर check लगाया हमने. Only if age is more than 18 तभी वो record insert होगा, right? Only जब भी age 18 से बड़ा होगा तभी वो record insert होगा. Let's try. Insert into emp1. Values employee ID 101. Age, let me insert 19. Let's run the query. It is accepting that value. Let's check the data has been inserted. Let's try with 18. Let's try with 18. 102. We are validating the check constraint against this column because we have set the check constraint on age column. Age column पे हमने constraint लगाया, वही हम लोग टेस्ट कर रहे हैं. We are not worried about employee ID column. Okay. Now it is allowed because the condition is true. Age 18 से बड़ा होना चाहिए या फिर equal to होना चाहिए. Age should be greater than or equal to 18. If it is less than 18, then it will throw an error. See, the check constraint is get violated, so that's why it is throwing an error. Okay, so this is about all the constraint. This is all about constraints which ensures that or prevent invalid data is being entered into a database and ensures that the accuracy and reliability of the stored data onto the database table. So that's why we use